day 4, and we have been discussing things about various aspects of using Turnitin. Today we are going to have a quick hands-on practice of certain things that we observe when a report is generated, and we have to see that whether the reports that are generated, how to decipher them, and how to interpret certain things inside those reports. So I'm going to be just 1 second, connecting a few people right as we are talking. Okay, so here we are. I'm going to discuss with you, because I have been trying to establish the fact that every one of you has your Turnitin accounts set up. So that I was trying to do, and in doing that, yesterday late in the evening, I could try to have everyone's Turnitin account functional. So most of the things that we have to do with Turnitin relates to basic processing, as well as addressing certain issues, meeting certain requirements inside it, and we are going to start this off today. I have to share my screen with you. I myself will disappear, but my screen will be visible to most of you who are seeing it. Okay, so here goes my desktop. Now, when we talk about processing documents inside Turnitin, just a second. Okay. When we talk about processing documents in Turnitin, basically what we are trying to do is that we are trying to put each and every document here and see how it is processed, how the report comes out, and what does the report normally contain. Today I'm going to circle the discussion around this fact that when we have a Turnitin report, what does that report really mean to us? What do the nitty-gritties inside a report reflect? Let's have a look. Sorry, got a bad throat. We will look at a thesis of, say, MA English here. Let's open something from the previous session. These are we have already discussed about making master classes and then making subclasses or sections inside them. You will have a few tasks coming up which are going to ask you to demonstrate doing that yourself. That is just coming up because I was waiting for everyone's Turnitin account to get functional. That happened. So let's quickly go through a few of Masters in English thesis just as a sample. For instance, we have a thesis of repeaters in December 2012. So when you view it, it shows you documents here. Let's open a document that's of higher percentage. All right. So as you can see here, most of the things that we have in this report are outlined on the right side. This right side place is called the sources window or the sources pane, where all the sources are visible, and the left side is the text, and the text in black color is the text that has not been found or that has been properly cited, or that is okay in terms of the report. And the text that we have in colors show a relationship with these sources. So each source that we have here is having a particular color as well as a particular number. So if you keep coming down, even if this is 200 sources, these are 35 at the moment. If it is 235 even, every resource is differentiated from the other through some color. A few things about the colors. People have been wondering, myself included, that what do these colors signify? Basically, according to Turnitin itself, yes, the first one is deliberately labeled as red color, showing the intensity that yes, this source is the one which has been used the most. Like this is the most dangerous amount of percentage. बाकी के जितने भी colors हैं, they are just used in random order just to differentiate one from the other. It is not in the order of severity that
it starts getting less dangerous, least dangerous, and not dangerous, and okay. There is no such thing as that. If you keep coming down, this is number 1, red. You can see number 13, red too. So understanding colors should not be a problem. This is about sources. Each source here refers to the highlight over here. Now today what we are discussing is very important because we have to see 3 or 4 things. Number 1, we have to see how to go to these sources. If you have to do some further investigation, ये 5% कहाँ से लिया गया, और for instance ये चीज कहाँ से ली गई. This is student submitted to. Let me turn on the magnifier for you to have a better look. No, I mean you want the overall view. Okay, good enough. I hope everyone has the same experience, I believe. So when we have the sources on the right side, number 1, today our job is that we have to discuss how to go about these sources. If you have to do some further investigation, if you have to see that which sources are going to lead you to what place. This is agenda number 1. Agenda number 2 that we have is, when you see the sources, a close look at the document reveals many things to you. How to interpret these highlights. And there are areas which are referenced poorly. You can see them too. And then there are areas which are pure plagiarism. By that I mean if some portion is picked and used as it is with a slight modification, so you will see that too. So I'll start off with the things on the right side first. These are the sources, and today I'm going to just give you a little look at this one. Some of you wanted to know this layout also, so आज हम थोड़ा सा इस layout पर discuss करेंगे, then we will go back to the text only report जो मैं आमतौर पे I personally prefer. Alright, so what happens is that if I start from the document, I start coming down, ये एक report है. Now look at this one, this is 14%, number 14, source number 14 is put here. So it shows that the author has used from here to here as it is. After that the author has put the word himself or herself, and then this word again is linked with this sentence, and then this word has come in from the author, and then the same sentence continues here, and then there one word comes here that is written by the author. So the black text that you see over here is actually the one written by the author, no one else. One important thing that you may be wondering, if you don't already know, that how would Turnitin know that this is the same, these chunks, all of them belong to one source? This is a very logical question. If I continue on with this, if there is a source number 1, for instance, from an internet source, you see the highlights here. Somebody please mute your mic. I'm waiting for someone to mute your mic, please. Thanks. So in this one, if you see source number 1, look at the pattern of highlights. It goes on and on and on, and it leaves this one word empty. I mean, it does not highlight this one. Then it keeps going on, and then it leaves this text black. So
And the main question that arises is that how would Turnitin know that when something is highlighted like this, or if something is broken down into 6 pieces or 10 pieces and spread across the whole document, how would Turnitin build the relationship that this text belongs to that line? This is a very what should I say? There is no one straight answer to this, because it does it. There are certain things they would not actually let us know completely, but if you try to understand this, the very logical. Let me explain. For instance, you must be aware of, or you should be aware of something called indexing. I'm googling it in front of you right now. Search engine indexing. Okay. What is indexing? Indexing is basically the basic idea through which, now this will get a little boring technical, but you must understand it for your information. This is the definition of this. I am highlighting it to the maximum. Search engine indexing collects, parses and stores data to facilitate fast and accurate information retrieval. Now, if I were to decode this sentence, it means that whatever information or whatever data, by data, if we are talking about textual data, it is available online, written in on web pages, written in online journals, databases. तो search engines होते हैं, they collect the data, parse it. Parsing it means piecing it separately. लेकिन piecing इस तरह करते हैं, मिसाल के तौर पे एक sentence है. I'm giving you one simple example. This is like it is very cold in Islamabad today, which is a fact. I'm wearing a pullover and I'm wearing a jacket also. So this is very cold in Islamabad today is one string of sentence, but if this is going to be indexed by search engine, it is going to parse it into all the words and then it is going to connect them together, like saying that ये एक sentence है जो कि किसी जगह पे ऐसे appear हुआ इस combination में, in words के साथ. So ये होती है parsing. Then उसके बाद and stores data to facilitate fast and accurate information retrieval. Information retrieval means information acquisition. So आप जब search engine में लिखते हैं, now you must be wondering, आप search engine में जो कुछ चीज लिखते हैं तो वो आपको results कैसे देता है? Look, what I'll do is I'll write in google.com. Look at the words I'm going to use: video or quiz, free, online. मुझे इन वर्ड्स की तलाश है, तो जिस जगह पे ये वर्ड्स एक सेंटेंस में किसी कॉम्बिनेशन में होंगे, ये मुझे कीवर्ड्स के जरिए सर्च कर देगा. आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि गूगल कीवर्ड्स को क्यों इस्तेमाल करता है, बिकॉज इसने जिस तरह इंफॉर्मेशन को स्टोर किया हुआ है वो वर्ड्स की शक्ल में है, लेकिन वो उन वर्ड्स को फाइंड आउट कर लेता है जिस जगह पे वो यूज हुए हैं. मतलब यू कैन जस्ट से कि वो हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी वर्ड्स को सर्च करता है. अगर आपके पास एक वर्ड्स की पूरी चेन है तो वो उसको अलग अलग वर्ड्स का भी पता है और उसको इवन स्पेलिंग्स का भी पता है. दे हैव बिल्ट इट अराउंड दिस. अब जिस जगह पे जिस वेब पेज पे ये वर्ड्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल हैव अ लुक एट दिस वन, हैव अ लुक एट दिस वन. अब यहाँ पे इनकी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन में ये वर्ड्स इस तरह लिखे हुए हैं: यू कैन प्लेस दिस एनीवेयर इन द क्विज. देखिए क्विज का वर्ड आ गया. सच एज अ वीडियो, वीडियो का वर्ड आ गया. टू वॉच एट द स्टार्ट ऑफ क्विज, फिर क्विज का वर्ड आ गया. आगे जाएं तो यहाँ पर जाके एडवर्टाइजमेंट, फ्री, उन्होंने फ्री का वर्ड दिया. जितने मेरे कीवर्ड्स फाउंड इन दिस पेज, तो ये सर्च रिजल्ट्स में अपीयर हो गया. सो मैं आपको जो द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक वाज द इशू ऑफ इंडेक्सिंग. अब हम जल्दी से आ जाते हैं टर्निटिन पे वापस के. व्हाई आर वी डिस्कसिंग दिस? बेसिकली होता यह है कि जो सर्च इंजन इंडेक्सिंग का मैकेनिज्म यूज करती है टर्निटिन एंड all of such softwares or all of such web services are relying on Google's mechanism of indexing. So इनके पास हर चीज इंडेक्स हो रही होती है. So अगर एक चीज किसी जगह पे ये लिखी हुई है इस कॉम्बिनेशन में, तो आपने उस कॉम्बिनेशन के पीसेस कर भी दिए तो वो कॉम्बिनेशन के आपस में लिंक्स को जानता है. सो इट नोज के स्टीरियोटाइप्स आर ऑल्सो के बाद यहाँ पे कुछ और था, या अगर नहीं भी था तो ये और ये जो अगला हाईलाइट है वो उसके साथ लिंक्ड है. सो ये जो होता है ना कि अगर एक चीज को इवन लोग कहते हैं कि अगर आप वर्ड्स के ऑर्डर चेंज कर दें, आगे पीछे कर दें, तो फिर भी हाईलाइट हो जाता है. लेकिन हाँ, अगर आप वर्ड ही
बदल देते हैं, मतलब इफ पीपल स्टार्ट पैराफ्रेजिंग इट, जो कि उतना ही बल्कि उससे डबल मेहनत वाला काम है जितना कि आप खुद लिख लें, तो वो चलो एक यू आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू। लेकिन जिन केसेस में स्टूडेंट प्ले अराउंड करते हैं चीजों के साथ ऐसे, मतलब जो स्टूडेंट लेजी है जिसने काम नहीं करना, तो वो इतने तरद्दुद नहीं करेगा कि वो पैराफ्रेज करेगा। वो क्या करेगा, उठा के कॉपी पेस्ट करेगा, चीजों को आगे पीछे करेगा, उसके पीसेस करके 6 जगह पेस्ट कर देगा, और आप जब रिपोर्ट निकाल के बैठेंगे तो स्टूडेंट भी परेशान हो जाते हैं कि यार ये कैसे हुआ, हमने तो उसमें बड़ी मेहनत करके इसको अपना बनाने की कोशिश की थी। सो आपको ये समझ, एक रिपोर्ट राव भाई साहब, आवाज आ रही है आपको? आवाज भी आ रही है सर? नहीं आ रही। आपकी तरफ आ रही है? नो सर, मेरा ख्याल इस्लामाबाद में शायद कोई प्रॉब्लम है उधर। बल्कि ऐसा ना करें सर, रिक्वेस्ट करें कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं, ये हम कल कर सकते हैं बेहतर ऑडियो के साथ। कॉल करके ये तो कनेक्टिविटी नहीं आ रही बिल्कुल भी। जी सर। और नाम साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ ट्रेनिंग। सो बच्चे यही ज्यादा चीजें पूछते, तो इसको कल के लिए कर दिया डिले तो बेहतर है। जी सर। Assalamualaikum sir, one question. I'm sorry, I think something went wrong. Can you people? I heard your suggestion, sir. I heard your suggestion. I heard the audio. The point is that the conference will go on for some days. So I really may not be able to reach. Somebody please turn off the mic if you can. Okay. So we may not be able to go there for probably next week too, because there is a PhD defense going on there. There's going to be an interview tomorrow as well. What we can do is, because I do understand the limitations, abhi chuke is both at the same time वहाँ भी video conference चल रही है. I was just trying to hint that I'm praying that we go smoothly today, just in case. We have a better platform of Google Hangout if you like to connect, because that I find more reliable in such circumstances, because अभी इस वक्त हम यूनिवर्सिटी की बैंडविड्थ से पूरा चल रहे हैं. So let's try to resume and see if it works. If it disconnects again, we can see Google Hangout too.
Sorry, I did some bad shit today. Okay, I hope you can hear me correct now. Yes, okay. Let's Madam Rabia, can you get everything correctly? All right. Okay. All right, so what I was discussing with you was about the report itself. The first thing I explained was the mechanism through which document Turnitin highlights the text. उस mechanism में बहुत मुश्किल होता है for anyone to dodge, even if they change the word order, even if the text is put in different places, pieced and put in different places. It is easily highlighted because the indexing mechanism realizes that which text belongs to which text and in what order. So this is one thing about the highlights. Or highlights में basically I explained there are three types. One is of pure similarity. अच्छा, one thing I need to make clear is when we say similarity, what do we exactly mean? Similarity index. Turnitin की रिपोर्ट के आगे लिखा हुआ था like similarity index, like this one. If you see this one, it says 18% similar. They are very careful in using the word similar. They don't say 18% plagiarized. And you should understand the difference too, very sharply. I explained that on the day of the quiz also. When we have something called similarity, we only mean one thing, that is the things which are found similar on the basis of being common, like nouns, like, and by nouns I mean all sorts of nouns, all of them, names of anything, names of person, theory, subject, यूनिवर्सिटी. अच्छा, इसमें हमारे टेबल्स भी आ जाते हैं. टेबल्स जो हैं अभी तक टर्निटिन के अंदर टेबल व्हाट शुड आई से टेबल जो है ना, टेबल की डिसाइफरिंग सिमिलैरिटी अभी तक उसमें कवर्ड नहीं हुई. सो अगर एक टेबल आप उसमें बना के डालते हैं एक्सेल का, फॉर इंस्टेंस जो लोग चार्ट्स बना के डालते हैं, तो वो उसको इट ओपन्स इट अप एज टेक्स्ट ओनली, टेक्स्ट एंड वैल्यूज. वो हाईलाइट लाजमी होती है और ढेर सारी होती हैं, लेकिन उसके साथ होता ये है. लेट मी ओपन सम अदर रिपोर्ट टू एक्चुअली शो यू दैट. जस्ट गिव मी 1 second. While I open that, so basically what happens is tables are going to remain the way they are. Tables ko you can't actually do anything much about it. Agar there is an image, so image bhi us tarah se Turnitin ke abhi, because Turnitin is just right now so far is covering similarity of what should I say, the documents which have the text only. It's just like a text matching tool. ये word भी यूज किया जाता है इसके लिए. It's a text matching tool. So अब अगर एक स्टूडेंट टेबल बना के डालता है, टेबल का देखें, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये एक थोड़ी सी कुछ मिसकंसेप्शंस भी चल रही हैं. सो आपका नॉलेज बेस स्ट्रांग होना चाहिए इन बातों के बारे में कि लोग ये बात करते हैं जी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीज तो हाईलाइट हो जाती है, मान लिया हो जाती है. लोग कहते हैं कि फॉर्मूला सेम होते हैं और पीपल कीप ऑन टेलिंग यू कि वैल्यू सेम होती हैं. आपने कोई चीज अप्लाई की है, जैसे इंजीनियरिंग में बहुत ही चीज चलती है, आईटी में बहुत होती है, मैनेजमेंट साइंसेज में बहुत हो रही है. अच्छा, उनकी अब ये देखें कि उसकी जो परसेंटेज ऑफ हाईलाइट है, लोग ये समझते हैं कि अगर ये पूरा टेक्स्ट रेड हुआ है, अब आप इसको देख रहे हैं, ये पूरा टेक्स्ट रेड है, लेकिन ये नंबर 1 सोर्स है. नंबर 1 सोर्स यहाँ देखिए 18% है. तो मतलब ये कि अगर आप एक सोर्स से 18% चीज ले रहे हैं और उसको एज इट इज उठा के यहाँ रख रहे हैं, तो नेचुरली आप क्लेम, असल में जो लोग ये बात अक्सर कर रहे होते हैं ना कि देखें जी उसने फलां चीज भी हाईलाइट कर दी, फलां चीज भी हाईलाइट कर दी. मैं आपको बता रहा हूं, आप रिपोर्ट खोल के देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि असल चक्कर क्या है. अगर किसी ने इक्का दुक्का दरमियान में कहीं पर उस चीज को यूज किया हो, सो यू हैव आईज, यू कैन सी कि वो एक तो अगर बहुत ज्यादा परसेंटेज ला रहा है तो एक्सक्लूड हो सकता है. नंबर्स, फिगर्स, टेबल्स या वैल्यूज, जो इस तरह के जितने भी, वो अगर फॉर एग्जांपल आपने एक टेबल के अंदर वैल्यूज रखी हुई हैं, वो सारी की सारी वैल्यूज हाईलाइट हो जाती हैं. अब ये टेबल इन्होंने रखा हुआ है, देख रहे हैं. अब इन्होंने टेबल्स कुछ इमेज बना के रखे हुए हैं, डजंट मैटर. मैंने बताया कि टेबल ने वैसे भी डिसाइफर नहीं होना और टेबल के केसेस में प्लेजरिज्म के चांसेस कम होते हैं. अब
होता यह है कि जो ढेर सारी हाईलाइट नहीं, मैं आपको अभी आई एम कमिंग टू दैट। ये देखिए ना, अब ये चीज जो है, अब कहने को तो ये टेबल है, ये देख लीजिए, ये टेबल है, लेकिन आप जो ये इन चीजों को हाईलाइट देख रहे हैं ना, ये इन्होंने किसी जगह से ये पूरा फ्रेमवर्क उठाया है जिसके क्वेश्चंस तक वही हैं। अब बात ये है, देखें, जब हम इस सारी बातों में घूम फिर के उधर आ जाते हैं जी कि आपने रेफरेंस कैसे करना है। आपने रिसेंटली एक साइटेशन की मेरे साथ छोटी सी एक वीडियो की है जिसमें आपने मुझे बना के दिखाया जी कि एक बुक कैसे कोड करते हैं, तमाम चीजें कैसे कोड करते हैं। तो आप जरा उसमें जब आपको वक्त मिले, यू कैन हैव अ लुक एंड सी कि उसमें बाकी इतनी ढेर सारी ऑप्शंस हैं। डू दे रियली लीव आउट एनीथिंग? लोग जब ये बात करते हैं जी कि हमने जो पाकिस्तान का 5 साल मंसूबा है उसके अंदर से फिगर्स लेनी है, तो हम कहां से लें? Nobody stops them from doing that. लेकिन what actually they are trying to escape is that they are not trying to learn how to reference such stuff. What they mean is that they would pick a substantial chunk of things from a certain government document and put it in their thesis as a matter of padding, P-A-D-D-I-N-G, which means you are going to make your document heavier, thicker, looking like a PhD thesis. ये चीज स्टूडेंट्स आम करते हैं that if they have to increase number of pages they are going to take a सहारा of any official document, जिसको वो ये कह के प्लीज देते हैं जी कि अगर एक बैंक का रिकॉर्ड था या बैंक की हिस्ट्री है तो वो मैं अपने अल्फाज में कैसे लिखूं। दिस इज अ वेरी लेम एक्सक्यूज। द रीजन इज दैट उस बैंक की हिस्ट्री तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप इतने हैं कि आप बिल्कुल आप कहते हैं जो जिस जबान में वो बैंक की हिस्ट्री लिखी गई वो हरफ आखिर है। सॉरी, दिस इज अ लेम एक्सक्यूज। आपने बैंक की हिस्ट्री बैंक की वेबसाइट से उठाई। आई एम स्पेशली रेफरिंग टू इंटर्नशिप रिपोर्ट्स ऑफ बीबीए और मैनेजमेंट साइंसेज के जितने प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं या उनको भी इंटर्नशिप रिपोर्ट्स मिलती हैं, इसमें अक्सर लोग यही काम करते हैं। ठीक है, आपने किसी बैंक के साथ काम किया, उसकी आपने हिस्ट्री लिखी, सारी बातें लिखी, मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया। पीपल डोंट बॉदर टू राइट because they don't want to write. So what they do is they start giving you excuses कि जी मैंने उसकी वेबसाइट से उठाई है, मुझे बताएं उसकी हिस्ट्री चेंज होगी कि नहीं होगी। It's a very very lame excuse. Reason is that ये तो ऐसे ही है कि हम और आप जो इंग्लिश वाले बैठे हैं, हम कहें यार शेक्सपियर ने एक बात कही है, डार्विन ने एक थ्योरी दी या सैपियर-वॉल्फ ने एक हाइपोथेसिस दिया इस जबान में, ठीक है, दे दिया। आपने उसकी जबान को एज इट इज कोट कर दिया, इन्वर्टेड कॉमर्स लगा के चलेगा। लेकिन जब आप उसकी इलैबोरेशन पे आते हैं तो आप ये कह दें कि चूंकि फलां क्रिटिक ने उस जबान में उसको लिख दिया तो मैं क्या उसको चेंज करूं? दिस इज वेयर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज वी ऑल नो कि even if the scholarship, even if the academic work exists, when it comes to anyone sitting down to write, आप thesis लिखते हैं, PhD का काम करते हैं, research paper लिखते हैं, in one way or the other it's a reproduction of many things. आपने अगर literature review लिखते हैं, और अक्सर लोग इस ये plea बहुत ज्यादा लेते हैं जी कि सबसे ज्यादा plagiarism तो literature review में आता है, ठीक है, और उसकी प्ली क्या देते हैं जी कि चूंकि आपने लिटरेचर रिव्यू में औरों के काम का जिक्र करना होता है तो इसलिए उसमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी आती है, बाकी थीसिस तो आपने खुद लिखा होता है। अब आप इस सारी बात की रेपरकशंस को समझ जाइए, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग इट ऑन अ डिफरेंट लेवल। जो शख्स ये बात कर रहा है उसका सीधा सा मतलब ये है कि इन लिटरेचर रिव्यू द पर्सन हैज नॉट bothered to write something. He has just spent time to what should I say, piece together chunks of things from different sources. So जब इस नेचर का काम करने की कोशिश की जाए तो फिर आप जिस तरह के आर्गुमेंट्स लोगों से फेस करेंगे, you should be potentially ready for that. And if you like to, you have to combat them, telling them कि literature review can be properly written too. ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की है अपनी एक जो टर्निटिन ओरिजिनलिटी रिपोर्ट की वीडियो के अंदर डिटेल में, अभी तो मैं आपको दिखा रहा हूं। नाउ इफ यू लाइक टू हैव अ लुक, देखिए ये इमेज है। अब ये उसने सोर्स की दे दिया, द पर्सन हैज बीन गुड इनफ, ओके, लेकिन ये इमेज बेशक गूगल से उठाया हो, दिस इमेज वुड नॉट अमाउंट टू एनी सॉर्ट ऑफ प्लेजरिज्म, रीजन बीइंग दैट इमेजेस आर नॉट एक्चुअली डिसाइफर्ड और अंडरस्टूड एज बिलोंगिंग टू अ सोर्स। आप इंटरनेट पे भी चेक करते हैं, कोई इमेज उठाते हैं, वो वेबसाइट पे पड़ा होता है, लेकिन जब आप उसको अपने पास डाउनलोड कर लेते हैं, कोई उसका तरीका नहीं है कि उसकी ऑथरशिप किसके पास है, आप उसको यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हमारे यहाँ वो कॉपीराइट वाला स्टफ नहीं चल रहा, जिसकी वजह से
वी एक्चुअली फील वी आर लिविंग इन अ फ्री वर्ल्ड. जो चीज आई इंटरनेट से उतारी और चला दी. वीडियो के साथ भी ये मसला है और इमेजेस के साथ भी ये मसला है और इवन इमेज के अंदर जो टेक्स्ट या टेबल होता है के साथ भी ये मसला है. और एक बात मैं जरूरी बता दूं, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु हैव दिस फैंटेसी गोइंग अराउंड दैट अगर आप टेक्स्ट का इमेज बना के, ये एक फंक्शन होता है कि अगर आप इस टेक्स्ट को बतौर इमेज सेव करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट के अंदर वो इमेजेस पेस्ट कर देते हैं, तो व्हेन इट इज प्रिंटेड इट लुक्स लाइक टेक्स्ट, व्हेन इट इज प्रोसेस्ड तो मशीन समझती है कि ये क्या है, ये इमेज है. ये एक बहुत आई मस्ट यूज द वर्ड, बहुत मजे की फैलेसी चल रही है. पीपल हैव बीन विद दिस एंड मैं बड़ा हैरान हुआ सुन के कि यार ये कैसे हो रहा है. सो आई इन्वेस्टिगेटेड a little, so I was given an answer in this shape. I'm sharing with you the stuff that very few people know. I was told that Turnitin uses OCR. OCR क्या होता है, आज आपको मैं ढेर सारी हैवी ड्यूटी बातें बताऊंगा. I hope you enjoy. Just a minute. What is OCR? ये लें, चलें मैं थोड़ा सा अपने गले को रेस्ट. You are done. Optical character recognition. It's usually abbreviated to OCR, is the mechanical or electronic conversion of what? Scanned or photoed image of typewritten or printed text into machine encoded computer readable text. Now, I don't know how much of this has made sense to you. लेकिन सीधा सा मतलब ये है, this technology or this technique allows certain machines to read the text, recognize the text in an image. ये आमतौर पे यूज होती है स्कैनिंग की टर्म में. आपके पास एक प्रिंटेड वर्ड है, एक प्रिंटेड पेपर है जिसको आपने स्कैन करना है. आप उसको स्कैन करते हैं. अगर आपके स्कैनर में OCR मौजूद है या कोई सॉफ्टवेयर ऑफ स्कैनिंग ऐसा यूज कर रहे हैं जो OCR को सपोर्ट करता है, सो आपके पास अगर वो इंग्लिश का पेज है तो अगर उसमें इंग्लिश की OCR के फीचर्स मौजूद हैं, इट विल रीड द होल पेज एंड देन इट विल कन्वर्ट इट इनटू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल. ठीक है. जितने आप में से लोग PDF से वर्ड में कन्वर्ट करते हैं वो असल में इस तरह होता है कि वो टेक्स्ट को पढ़ता है, पहले पढ़ के उसको जल्दी से वर्ड में कन्वर्ट करता है. जितना स्कैन क्लियर होता है उतना उसको कन्वर्ट करना आसान होता है. अच्छा, हम जल्दी से आ जाते हैं जब लोग उसको यूज करने की कोशिश करते हैं टर्निटिन में. सो होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ. फॉर इंस्टेंस इस टेक्स्ट में हम अगर फर्ज कर लें, इस बंदे की हाईलाइट्स देख के आपको खुशी तो हो रही होगी, बट फर्ज कीजिए कि ये पैराग्राफ किसी बंदे ने पैराग्राफ्स आफ्टर पैराग्राफ्स के इमेजेस बना के यहाँ रखे हुए हैं. जो वर्ड की फाइल थी, वर्ड की फाइल में इमेज पेस्ट कर दिया इस टेक्स्ट का. ठीक है. और इस खुशी के साथ ही जब मैं इसको भेजूंगा तो ये मशीन इसको बतौर इमेज ट्रीट करेगी और इमेज ट्रीट करके इसको साइड पे कर देगी. Whoever thinks of that is sadly mistaken because their services read the text. So इस टेक्स्ट को रीड करके इसको बतौर टेक्स्ट ही समझेंगे, जो मर्जी आप कर लें. I have tried it personally just to be sure that what I was told is correct. And you should know this one big secret that is lying out there in students. They believe that if they convert the text into image and put the image into the word file and send the word file for Turnitin processing, they will be safe. No way, they won't be. So this is thanks to such horrible things as optical character recognition. It reads the text. और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि OCRs are available for almost all languages in the world, even Urdu. There are certain special softwares which support Urdu optical character recognition also. आप पेज स्कैन करें, सॉफ्टवेयर रन कर दें, वो सारा उर्दू का टेक्स्ट पढ़ के आपको एक उर्दू की रीडेबल फाइल बना देगा. So साइड पे बहुत काम हो चुका है. So this is the second side of this. So टेक्स्ट की हाईलाइट हम डिस्कस कर रहे हैं कि what does the report tell you. और जहां तक मसला टेबल्स का,
मैंने कहा कि there are softwares available which offer Urdu supported optical character recognition. That means if you scan a page in Urdu, it will read the whole page, it will recognize the text and convert it into an editable Urdu file. There are softwares available. So much work has been done in machine readable texts, no matter in whatever shape they are. Okay. All right. So we have discussed this at length. Now let's come down to the second part of the whole story. That is on the right side. I hope everyone can still listen to me. If you could please verify. Say any such thing. I did not say any such thing. I'm here, relax. I know you can raise your heads. I mean, I have to frequently check when I stop going ahead. So I have to come back and reconnect. So this is happening. I think this will be one last time this will happen today. Okay. No, not that. I have to check myself whether I am frozen because I really see myself frozen in the window. Okay, thank you. I hope you are listening to me again, right? Okay. So, where were we? We were here. Alright, so regarding this text stuff, we have seen the details of the highlights on the left side. Time to have a look at a few things on the right side too. When you have these sources, this is something that you need to pay very close attention. You see things here. इस layout में एक चीज मुझे पसंद है, that is this one. That it clearly shows you underneath with the link what kind of source is this. Like, is it an internet source? Is it a student paper? Is it an internet source? So text only view है, उसके अंदर थोड़ी सी limitation है. So I normally if I have to see something with specificity, I come here. अच्छा, आप इस एक लिंक पे क्लिक करते हैं ये चेक करने के लिए कि ये सोर्स नंबर 1 क्या है. ये एक बहुत क्रूशियल चीज आ रही है. आप if you click on this link here, this will show a small window on this side of the screen and it's going to give me a small glimpse. I can click here, view full source view also. I mean, I can have a full look at the document by clicking here. This will probably open the document in the same place, in the same window. So मुझे verify हो जाएगा कि ये document कहाँ से ली गई. इंटरनेट पे, because ये इंटरनेट पे किसी फ्री जगह पड़ी है. देख रहे हैं पूरी डॉक्यूमेंट आ गई थी. So होता ये है कि जितने भी इंटरनेट सोर्सेज हैं, normally they are all, what should I say, they are all accessible. ठीक है. Internet sources are all accessible because when they say internet sources, it means it's available. It's available publicly. Student papers के साथ issue ये है कि student papers are not actually available for free. एक बात. Publication का भी chance 50-50 है because it depends कि अगर publication public है तो आप देख सकते हैं. अगर publication public नहीं है, so you will end up at a place where it will ask you to log in and give a password. Let me show you an example of a publication also. If you click this and this is going to show me the publication here. This is from International Patent Protection Research Policy. उसके अंदर से ये चीज ली गई. You see this, ये सारे का सारा हाईलाइट उसी में से है. लेकिन इसमें कंट्रीज के नाम हैं और पॉइंट नंबर्स हैं. अच्छा, if I want to have a look at the full source यहाँ पूरा खुल जाएगा. अब ये इत्तेफाक से एक पब्लिकेशन है लेकिन पब्लिक है, so all right, no problem with this. अच्छा, the most problematic area which you people should remember
through and through is the student paper. ठीक है? Why is it a problematic area? Let me explain. अब ये लिखा हुआ आ रहा है student paper submitted to Higher Education Commission Pakistan. मेरा ख्याल है I have spoken this because this is probably the one thing I speak a lot about, and you people must have heard me speaking about this already. That पाकिस्तान में जितना भी टर्निटिन अकाउंट चल रहा है वो हायर एजुकेशन कमीशन के अंडर चल रहा है. व्हाट हैपेंस इज टर्निटिन का मैकेनिज्म ऐसा है कि दैट इट गिव्स टर्निटिन अकाउंट्स टू अ यूनिवर्सिटी, जो एक प्रोसीजर है या किसी इंस्टीट्यूट को देती है, वो इंस्टीट्यूट आगे अपने डिपार्टमेंट्स को दे देता है. सो हर डिपार्टमेंट का एक अलग अलग सिस्टम बन जाता है. ठीक है? पाकिस्तान के केस में हायर एजुकेशन कमीशन हैज एक्वायर्ड अ कंट्री वाइड लाइसेंस फ्रॉम टर्निटिन सिंस लास्ट 3 years, I guess 3 or 4. ठीक है? सो उस हिसाब से देखा जाए तो टर्निटिन की डिक्शन में हायर एजुकेशन कमीशन इज द यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान, और बाकी उसके नीचे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो कि असल में हम लोग हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वी आर इन टेक्निकल टर्म्स वी आर इट्स डिपार्टमेंट्स, विच मीन्स वी आर डिपेंडेंट ऑन हायर एजुकेशन कमीशंस मदर अकाउंट. यहाँ मदर और चाइल्ड वाला सिस्टम इट कम्स इन दैट लैंग्वेज ऑल्सो. सो पाकिस्तान में कोई बंदा भी एचईसी गिवन टर्निटिन अकाउंट के जरिए पेपर प्रोसेस करता है, वो पेपर पूरी टर्निटिन की रिपोजिटरी में ऐसे ही जाता है कि स्टूडेंट पेपर सबमिटेड टू हायर एजुकेशन कमीशन. ये बहुत सैड बात है बिकॉज इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. आपने प्रोसेस किया अपने अकाउंट से, कॉमसेट्स के अकाउंट से लाहौर में बैठ के, मैंने प्रोसेस किया नमल के अकाउंट से इस्लामाबाद में बैठ के, किसी ने और अकाउंट प्रोसेस कर दिया कोहाट में बैठ के उधर के अकाउंट से. लिखा हुआ एक ही बात आएगी, स्टूडेंट पेपर सबमिटेड टू हायर एजुकेशन कमीशन. और इसकी दूसरी ट्रेजिक बात यह है कि आप इस पेपर को एक्सेस नहीं कर सकते. लाइक अगर मैं यहाँ इस पे क्लिक करूंगा तो पेपर मेरे सामने नहीं खुलेगा. ठीक है? व्हाट विल हैपन इंस्टेड व्हेन आई क्लिक दिस, इट शोज मी समथिंग लाइक दिस. कम ऑन, यस. ये चीज जो आ रही है ना चैप्टर नंबर 1 और ये तो सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि ये पेपर मेरे पास पड़ा हुआ है. ठीक है? जो चीज आपके अपने अकाउंट से हुई भी है, ये बात गौर से सुन लीजिए कि स्टूडेंट पेपर सबमिटेड टू हायर एजुकेशन कमीशन के 2 केसेस होते हैं सिर्फ पूरे पाकिस्तान में. एक ये होता है कि अगर तो आपके अपने अकाउंट में पड़ा हुआ है तो आपको नजर आ जाएगा. अगर आपके अपने अकाउंट में नहीं है, मैं ये भी बात कह दूं कि इवन आपकी यूनिवर्सिटी में भी किसी ने किया है ना, आपके साथ बैठे किसी ने किया. अकाउंट का मतलब आई डोंट रियली गेट द क्वेश्चन. हाँ, मतलब कहने का ये है कि जिस तरह मैंने आपके टर्निटिन अकाउंट बनाए, आप यू आर द वन जिसने इस चीज को पहले अपने अकाउंट में कहीं प्रोसेस किया हुआ है. मतलब आपका जो टर्निटिन अकाउंट है उसके अंदर वो पड़ा हुआ है. जैसे ये मेरा टर्निटिन अकाउंट है, इफ यू कैन सी राइट नाउ. ठीक है? ये मेरा टर्निटिन अकाउंट है, इसमें मेरी ढेर सारी चीजें पड़ी हुई हैं. अब फॉर इंस्टेंस इसी मेरे अकाउंट के अंदर ही से किसी चीज के साथ वो पेपर मैच हो रहा है. सो आई एम गोइंग टू बी एबल टू हैव अ लुक एट इट. मैं फुल सोर्स से व्यू करूंगा तो ये मुझे दिखा देगा. लेकिन अक्सरियत केसेस में ऐसा नहीं होता. लेट मी फाइंड अ केस जहां पे ऐसा नहीं हुआ. जस्ट अ मिनट. उसमें दैट इज समथिंग. चलें, लेट्स शो यू समथिंग. जिन केसेस में आपको एक्सेस नहीं है, और वो केसेस मोस्ट ऑफ द केसेस होते हैं, और उन केसेस में होता यह है कि देयर इज अ मैकेनिज्म कॉल्ड सेंड व्यू रिक्वेस्ट. ठीक है? अब देखिए कि मैंने इस पेपर को खोलने की, इस स्टूडेंट पेपर को खोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं. ठीक है? मुझे लिखा हुआ आ गया कि ये 11% सिमिलर है. ये देखिए, ये है वो सैड सा नोटिस जो खासा तकलीफ दे है पाकिस्तान में स्पेशली. Now time for me to zoom in and show you the big picture. ये जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है ना ब्लू के नीचे, it says because submitted papers remain the intellectual property of their authors, instructors and respective institutions, we are unable to show you the content of this paper at this time. If you would still like to
view this paper, please click on the institution name above to submit a permission request to the author's instructor. You got it? कि अब ये मुझे कह रहा है कि आपने सेंड व्यू रिक्वेस्ट भेजनी है। उसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, हायर एजुकेशन कमीशन पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे इस तरह की विंडो दिखाएगा, ठीक है, और उसमें फिर नीचे भी लिखा आ जाएगा सेंड अ रिक्वेस्ट टू व्यू दिस पेपर। सो माय डियर कोलीग्स, दिस इज अ डाउन साइड कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग इस व्यू रिक्वेस्ट का जवाब देते हैं, because people, most of them don't understand what a view request is. Let me show you what it is. जब आप इस व्यू पे, इस रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं, आपको थैंक यू तो कह दिया जाता है कि थैंक यू, योर रिक्वेस्ट हैज बीन सेंट। मैं आपको दिखाने लगा हूं कि एक्चुअल होता क्या है, बिकॉज मुझे व्यू रिक्वेस्ट आती हैं, बिकॉज अब आपको समझ आएगी कि जितना काम नमल के अंदर प्रोसेस हुआ है उसकी वैल्यू क्या है, कि हम उसको एक जगह पे बॉटल नेक क्यों करके रखना चाहते हैं। रीजन इज, जो चीज नमल में प्रोसेस हुई उसको कोई और कैंपस का बंदा किसी और यूनिवर्सिटी में छेड़ता है तो उसकी हमें ईमेल भेजता जी कि आपके अकाउंट में एक डॉक्यूमेंट पड़ी हुई है और हमने उसकी सिमिलैरिटी अपने पास पा ली है। सो आप बताएं क्या करें। लेट मी शो यू। मुझे व्यू रिक्वेस्ट फ्रीक्वेंटली मिलती हैं, व्यू रिक्वेस्ट, लेट मी शो यू। ले जी, टर्निटिन व्यू रिक्वेस्ट, ये ले। मुझे ईमेल ऐसे आएगी, जिसको भी व्यू रिक्वेस्ट जाएगी, और व्यू रिक्वेस्ट किसको जाएगी, उस शख्स को जाएगी जिसके अकाउंट से वो डॉक्यूमेंट प्रोसेस हुई है। ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है, क्योंकि अब आपको मेरी कुछ बातों को शायद रेलेवेंट समझ आ जाए जब मैं बहुत शॉर्ट डाल रहा होता हूँ कि यार स्टूडेंट को मना करें कि वो किसी और यूनिवर्सिटी में किसी और के अकाउंट में अपना डॉक्यूमेंट प्रोसेस ना करें। व्हाट डज दैट मीन? उसका रिस्क क्या होता है? उसका रिस्क एक तो ये होता है कि अगर आपको उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना है या उसको व्यू रिक्वेस्ट, अब होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स क्या करते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास आएंगे और आपसे कहेंगे जी कि ये आप भी, आई होप दैट यू विल रिमेंबर दिस बिटर थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। स्टूडेंट कहेगा जी कि आप कहेंगे ना आपने कहीं प्रोसेस किया, वो कहेगा जी हाँ जी मैंने प्रोसेस किया, और डेट को आपको बताएगा जी वही डेट जिस डेट पे ये राइट साइड पे 11% आ रहा है, और वो आपके सामने कसमें खाएगा जी ये मेरा पेपर है, इसको एक्सक्लूड कर दें। मेरा आपसे एक बड़ा सादा सा सवाल है, आप मुझे बता दीजिए कि आपके पास या मेरे पास क्या प्रूफ है कि ये उसी का पेपर है। आप मुझे इसका जवाब अभी दे दीजिए। आई वांट यू टू टर्न ऑन द माइक्स एंड लेट मी नो, इसका क्या प्रूफ है मेरे पास अभी तक। मेरे पास 11% आ गया, मैंने इस पर क्लिक किया तो उसने मुझे आगे एक नोट दिखा दिया कि ये पेपर आपको इसकी व्यू रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। मैंने व्यू रिक्वेस्ट भेज दी, व्यू रिक्वेस्ट चली गई, मुझे इसका व्यू रिक्वेस्ट का जवाब नहीं आया, तो मेरे पास इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है कि ये स्टूडेंट जो मुझे कह रहा है कि ये 11% मेरा अपना जाती पेपर है, इसको एक्सक्लूड कर दें। आप इसे किस बेस पे एक्सक्लूड करेंगे? एनीवन हैज एनी आंसर टू दिस? Yes sir, may I sir? मैडम एक सेकेंड, राव काशिफ साहब फ्रॉम लाहौर। जी सर, प्लीज गो ऑन। अच्छा, उसमें फिर ऐसा करेंगे कि उसका पासवर्ड, जैसे आपने वो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, उसका पासवर्ड मंगवाएंगे और उसका जो ईमेल अकाउंट जो है, यूजर नेम जो है, दैट इज परफेक्टली ऑल। वो तो एक प्रॉपर प्रोसीजर है ना। जी सर। उन्होंने कहा है, मैडम राबिया इज ऑन हेडफोन सो शी कांट लिसन टू यू। उन्होंने ये कहा है काशिफ साहब ने लाहौर से कि लाइक वी हैव रिटन इन द पॉलिसी के स्टूडेंट से कहें कि आपने जहां से प्रोसेस किया हमें यूजर नेम और पासवर्ड ला दें। एग्री। ये चीज तो मैं आप कह रहा हूं ना, ये चीज तो अब आपको समझ आ जाएगी कि हम ये क्यों कहते हैं, ठीक है? बिकॉज वी कैन नॉट दैट वी डाउट पीपल, देयर इज नो वे, हमारे पास मशीन हमें किसी तरह असिस्ट नहीं कर रही ये बताने के लिए कि ये वही स्टूडेंट है। सो होगा क्या, इरफान साहब कमिंग टू यू, होता यह है कि मैं जो चीज डिस्कस कर रहा हूं, जब आपसे लोग मैनुअली एक्सक्लूड करने की बात करते हैं, जी राइट साइड पे आपको 90% आ रहा है, इसको एक्सक्लूड करना है, कोई आपके पास प्रूफ नहीं है, देयर इज नो प्रूफ एट ऑल, ठीक है? जब तक आपकी उस सेंड व्यू रिक्वेस्ट का जवाब नहीं आ जाता, ठीक है? अगर मैं आपको इरफान साहब, बिफोर यू से समथिंग, लेट मी जस्ट गिव मी 1 minute. I
want to show you what a view request will look like. Just give me 1 second. Then I'm coming right to you. ये देखिए, ये व्यू रिक्वेस्ट मैं आपको दिखा रहा था. मुझे व्यू रिक्वेस्ट भेजी किसने? जरा ये इसको यू मस्ट एक्चुअली हैव अ वेरी गुड लुक एट दिस वन. मुझे ईमेल टर्निटिन ने ऑटोमेटिकली भेज दी उसी वक्त, पर अभी नहीं, ये मुझे वैसे किसी ने भेजी हुई है. उसमें लिखा हुआ है टर्निटिन इज फॉरवर्डिंग दिस रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ शहरियार खान. अब ये मुझे उस इंस्ट्रक्टर का नाम आ रहा है जिसने मुझे व्यू रिक्वेस्ट भेजी हुई है. एंड Higher Education Commission. You see the problem here now? I have no idea कि ये बंदा नस्ट का है या IBA का है या लम्स का है. I have no idea. This is equally problematic. But anyways, हमारा कंसर्न इससे नहीं है. This instructor requests your permission to view the paper. कौन सा वाला? जो मेरे MSc IR Masters Essay मॉर्निंग के क्लास में पढ़ा हुआ है. In your MA thesis class at Higher Education. वो भी मुझे कह रहा है कि मैं भी Higher Education Commission में ही बैठा हुआ हूँ. ठीक है? और मैंने प्रोसेस उसको इस डेट पे किया. So when it asks me this, आगे देखिए, this instructor has found a 45% match to this paper. तो अब हुआ क्या होगा कि जब उसने इसको प्रोसेस अपने पास किया होगा, किसी ने इसको वहां जमा कराया, तो उसके पास हमारे प्रोसेस किए हुए पेपर से 45% मैच आ गया. क्यों आया? अब जरा मेरी इस बात को याद कीजिएगा, रिकॉल कीजिएगा. जब मैंने आपसे कहा कि जब स्टूडेंट का पेपर प्रोसेस करें तो उसको स्टूडेंट रिपोजिटरी में डालें ताकि आपके यहाँ के स्टूडेंट का काम कोई चुरा ना सके. आई होप यू नाउ गेट द एक्चुअल पिक्चर कि हम बहुत सी बातें इस तरह क्यों कर रहे होते हैं. अब चूंकि मेरे पास इस स्टूडेंट का काम सिक्योर मौजूद था, तो इस काम से उनके पास सिमिलैरिटी आई. अगर मैं उसको स्टूडेंट रिपोजिटरी में ना डालता तो उधर उस यूनिवर्सिटी में कोई बंदा पूरे थीसिस का क्रेडिट ले जाता. अच्छा, अगली बात भी सुन लें. If you choose to grant permission to the instructor to view the paper, simply reply to this email. अच्छा, अब होगा क्या कि अगर मैं इस ईमेल में रिप्लाई का बटन दबाऊंगा तो ये रिप्लाई में इस इंस्ट्रक्टर का ईमेल एड्रेस आ जाएगा ऐसे, shahryar@ndu.edu.pk. मतलब अब मेरा रिप्लाई सीधा उसको जा रहा है. एक बात, लेकिन इसके साथ जो दूसरी चीज है वो क्या है कि मेरे रिप्लाई के साथ क्या चीज जाएगी ये भी पढ़ लें. लिखा हुआ है कि, अच्छा ये देखें, प्लीज कंफर्म द टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट. I'm sorry, I keep going and coming back. No control. I can't do anything about it. Anyways, but the good thing is that this session is being recorded, so whatever I have been speaking while you were timed out for a small duration, that is being recorded and will definitely come to you. Don't worry about that. Okay? Irfan sir, you were asking something.
No, sir, I was sharing the same thing that we don't have any way that or any proof कि ये इसी बंदे का काम है, क्योंकि if you remember we have called you last week और हमने काफी डिस्कशन आपके साथ की थी, उसके बाद हमने उसको हमने भेज दिया था थैंक्स also we got the reply, so हमें पता चल गया था कि वो बंदा किसने भी इसको किया. So ये चीज अभी पाकिस्तान you have a question, madam? Yes, I will share if there is something. He is just saying that yes, he agrees that people don't share, people don't reply to this email. Most of the people don't exactly, जो Turnitin users हैं, most of them don't exactly know कि इस email का जवाब क्या देना है, इसका मतलब क्या है. So यहाँ पे इस चीज की वजह से आपको हमारी पॉलिसी के अंदर मौजूद बहुत सी बातें I hope क्लियर हो जानी चाहिए कि why they are the way they are. जब हम कहते हैं ना कि आप यूजर नेम पासवर्ड दें, अगर वो नहीं देगा तो हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हम उसको किसी तरह मान सके कि ये वही बंदा है. बाकी वो एक अलग बात है, लोग कहते नहीं मैं तुम्हारा यार हूं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, सो ट्रस्ट मी, या मैं फलां का रिश्तेदार हूं, मेरा काम कर दें. आप अगर इफ यू आर बीइंग ऑनेस्ट टू योर जॉब, नाउ दिस इज समथिंग आई वुड लाइक टू समराइज, इफ यू आर बीइंग ऑनेस्ट टू योर जॉब, दिस वन स्पेशली you would actually go by what you have. Otherwise होगा क्या, आप उस स्टूडेंट को किसी तरह फेवर करना भी चाहेंगे तो कल को वो आपके पास रिबाउंड होके आएगा कि जी आपने इसके ये सोर्सेज कैसे एक्सक्लूड किए, या इस बंदे की परसेंटेज ऐसी थी, आपने इसको किस बेस पे किया. सो कुछ थोड़ी सी मॉरल अकाउंटेबिलिटी और साथ साथ थोड़ी सी पॉलिसी अकाउंटेबिलिटी चलेगी तो बात चलेगी. सो आपके लिए कंप्लीट पिक्चर जानना इसीलिए जरूरी है. लाइक वी वर डिस्कसिंग टुडे द पीक्युलरिटीज ऑफ द कॉमन कॉजेज ऑफ हाई सिमिलरिटी, तो हमने वो तो आज देख ली, लेकिन उसमें जो सबसे जो उसका डाउन पार्ट है वो ये है कि जो सोर्सेज हैं इन तक रसाई बहुत मुश्किल होती है. अच्छा, एक खास बात मैं आपको और बता दूं, आई एम फिनिश्ड विद दिस वन. आप टेक्स्ट ओनली रिपोर्ट पे अगर जाएं तो टेक्स्ट ओनली रिपोर्ट में आई होप माय सेशन इज स्टिल टाइम्ड आउट. यस, आई एम स्टिल हियर. अच्छा, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर एक तो ये बात नहीं लिखी हुई आती कि ये इंटरनेट सोर्स है या ये कोई मैगजीन है या कोई जर्नल है. सिर्फ एक बात क्लियर लिखी आती है, सबमिटेड टू हायर एजुकेशन कमीशन. मैं यहाँ क्लिक करूंगा, यहाँ पर लेआउट देखें क्या आएगा. मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे कौन सी विंडो दिखाएगा, वही क्या आपने अगर इसके साथ मैच करना है. अच्छा, यहाँ पे एक दो बातें और. अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके अकाउंट में पड़ी है ऑलरेडी और आपको ये नहीं पता कि आपके अकाउंट में किधर पड़ी है, आमतौर पे जो डॉक्यूमेंट आपके अकाउंट की होती है, आई प्रे आई गेट एन एग्जांपल ऑफ दैट टू. ये काफी बात आपको बता दूं, देन वी आर डन. ओके, लेट्स हैव अ लुक एट समथिंग लाइक दिस. रिवीजन पेपर्स. ओके, आई होप आई गेट समथिंग. नो, not here. And one more thing, there are so many things to discuss. Yes, madam, please go ahead. No such thing. Madam Rabia is asking that when we give the students, like if किसी की percentage 19% से ज़्यादा है, when you give the report back, what do we ask the student? Like she says, do we ask them that आप जो red वाले highlights हैं, you can focus on them? No way. We don't say any such thing. मैंने बताया कि जो सिर्फ पहला source है 19, पहला source जो red होता है आमतौर पे, वो deliberately red रखा गया for the reason so that to give people an idea that there is some problem in this source. Agreed. But if a person is having 56% और पहला सोर्स 16% है, दूसरा 12 है, तीसरा 10 है, so फिर रेड वाली बात रह जाती है. What you actually have to do is you have to give the student report back. रिपोर्ट हाईलाइटेड होती है, हाईलाइट में लिखा होता है कि क्या क्या प्रॉब्लम किस किस जगह पे है. हमारे यहाँ पे चूंकि आप इंस्ट्रक्टर्स बेसिकली आप कहते ये हैं कि टेक द रिपोर्ट, सिट विद योर सुपरवाइजर एंड ट्राई टू इम्प्रूव दिस. दिस इज द jargon we use.
सो वो इम्प्रूविंग उस डॉक्यूमेंट को कोई आपसे गाइडलाइन चाहता है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसमें रेफरेंसेस को देखो। मुझे मेरे पास स्टूडेंट्स आते रहते हैं, दे कीप आस्किंग मी, स्पेशली पीएचडी और एमफिल वाले जिनको बहुत खौफ होता है कि पता नहीं हमारा क्या बनेगा, दे आस्क मी, हमें टिप्स बताएं कि हमारी प्लेजरिज्म का मायना। और दिस इज समथिंग पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू व्हेन यू आर इन दिस जॉब। दे रियली एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आपको कोई सीक्रेट्स पता है कि यार ऐसे करो तो प्लेजरिज्म नहीं आती, ऐसे करो तो नहीं आती। मैंने आपको स्टूडेंट की वर्जन तो बता दी कि स्टूडेंट क्या क्या सोचते हैं, क्या करो तो प्लेजरिज्म नहीं आता, और मैं आपको उसकी हकीकत खोल के बता चुका हूं कि आता है और क्यों आता है। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जो आपसे स्टूडेंट से जेन्युइन लोग पूछना चाहते हैं कि हम किन टिप्स को फॉलो करें तो हमारी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम्स कम आएंगे, सो आप उनको बिल्कुल ओपनली, लाइक आई डू हियर, आप ओपनली उनके साथ रेफरेंसिंग डिस्कस करें अगर आप यू फील यू हैव टाइम, या उनको रिसोर्सेज बताएं कि फाइन आप इंटेक्स साइटेशन के लिए इस चीज को करें, अपने रेफरेंसेस को प्रॉपर चेक करें कि वो प्रॉपर फॉर्मेट पे हैं। आप मर्जियां अपनी मत करें, या तो मशीन जनरेटेड कर लें, आप मशीन जनरेटेड से गुजर चुके हैं, लोगों को वीडियोस रेफर कर दें कि ये देखो, इसको फॉलो करते हुए अपने रेफरेंसेस डालो, और फिर उसको ये भी चेक कराएंगे कि फुल स्टॉप से पहले या फुल स्टॉप से बाद में। लोग आपसे सवाल करेंगे इन्वर्टेड कॉमर्स का क्या करना है, आस्क पीपल टू पुट इन्वर्टेड कॉमर्स। ये आप में से चंद लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि जो कोटेशंस के साथ रौला चल रहा है, किसी कोटेशंस की इन्वर्टेड कॉमर्स डालने की नहीं डालने, लोग कहते हैं जी कि एक साइड से अंदर कर दो, इतना इंडेंट कर दो, उधर से इतना इंडेंट कर दो, ये ब्लॉक कोटेशन बन गई, या उसको आपने इटैलिक्स कर दिया, बोल्ड कर दिया। मेरे पास आपके थीसिस आ रहे होते हैं, लोकल भी आ रहे होते हैं। आई एम शॉक्ड टू सी रिसर्च मेथोडोलॉजी के नाम पे स्टूडेंट्स क्या कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। आई टीचर्स को नहीं पता, वेरी सॉरी टू से एंड वेरी ओपनली टेलिंग यू, या तो टीचर्स को नहीं पता, या टीचर्स आर नॉट प्लानिंग टू अपडेट देमसेल्व्स इन दिस नॉलेज। उसका नुकसान ही हो रहा है कि जब स्टूडेंट की डॉक्यूमेंट मशीन के लिए आती है तो वो उतनी ही प्रॉब्लमेटिक होती है। आप मैं उस पे आ रहा हूं, आई एम कमिंग टू दैट। बेसिकली व्हेन इट कम्स टू कोटेशंस और ऑफ एनी साइज, इवन इफ इट इज फ्रॉम वन वर्ड टू अ 6 लाइन ब्लॉक कोटेशन, विच एवर कोटेशन यू आर टॉकिंग अबाउट। देखें, टर्निटिन के अंदर एक फीचर मौजूद है जिसको कहते हैं एक्सक्लूड कोट्स या एक्सक्लूड कोटेड। ठीक है, कोटेशन का मतलब ये होता है कि दिस इज समथिंग नॉट प्रोड्यूस्ड बाय यू, सिंपल एज दैट। इवन मैं कहता हूं कुरान की आयत भी हैं, हदीस भी हैं, जो लोग इस्लामियात या अरबिक के थीसिस लिखते हैं, उनके साथ बहुत बड़ा मामला चला है हमारे साथ यहाँ पे। वी एक्चुअली हैड टू ब्रिंग दैट इन राइटिंग एंड मेक इट क्लैरिफाइड। ये कैन यू लिसन टू मी? Okay, thank God. I thought I was frozen again. The picture is gone. Picture is gone. Just 1 minute. So what I was saying was कि quotation के cases में होता यह है कि exclude quoted या exclude quotations का उसमें ऑप्शन मौजूद है. That is available where? Just a minute. Here. Let me show you my screen. आप अगर इस लेआउट पे हैं तो ये रहा इंक्लूड कोटेड या एक्सक्लूड कोटेड। ठीक है, ये आप इसको दबा देंगे तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा, दबा देंगे तो इंक्लूड हो जाएगा। बात ये है कि ये फीचर तब काम करेगा जब इसको कोई चीज इस तरह मिलेगी जिसको कोटेशन कहते हैं, और टेक्निकली स्पीकिंग कोटेशन मार्क्स के अंदर हो तो इट विल रिकॉग्नाइज दिस एज अ कोटेशन एंड इट विल नॉट इंक्लूड इट। इस बात को जरा दोबारा सुन लीजिए कि अगर कोई भी चीज आप किसी स्टूडेंट कहते हैं कोट करो, तो जो रिटन स्टाइलिस्टिक्स है ना, रिटन स्टाइल्स कि आप उसको लेफ्ट से इंडेंट करके ब्लॉक करते हैं, ये चूंकि हमें फॉर्मेट्स दिए जाते हैं, हम फॉर्मेट्स में रहते हैं, लेकिन इसका सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि ये इवॉल्व नहीं हो रहे। सो होता ये है कि आई एम नॉट सेइंग दे आर रॉन्ग, प्लीज get this right. I'm not saying that they are wrong. What I'm saying is कि machine stylistics में machine understands the existence of a quotation mark as a starting point and existence of another quotation mark as the end point. आप यूं समझ जाएं कि ये देखिए आपके पास फॉर इंस्टेंस आप कहते हैं, हम वापस उस पेज पे जा रहे हैं, इंडेक्सिंग, तो हम कहते हैं कि इंडेक्सिंग ये है, ठीक है, या तो अब आप यहां देखिए कि
अगर आप यूं टेक्स्ट को चला रहे हैं ना तो मशीन इज एक्चुअली रीडिंग टेक्स्ट, इसको कहते हैं मशीन रीडिंग, जो आपका ये सर्विसेज करती हैं। अच्छा, इसमें इस मशीन रीडिंग में जो भी चीज आती जाएगी वो बतौर टेक्स्ट पे ट्रीट हो रही है और पढ़ी जा रही है, ठीक है। कैप्स और स्मॉल्स का भी कोई सीन नहीं है, कैप्स और स्मॉल्स आर द सेम थिंग। जहां पे आप इस तरह की चीजें यूज करते हैं ब्रैकेट्स, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इसमें डिफाइंड चीजें हैं वो डिफाइंड चीजें क्या हैं, इट हैज द डेफिनेशन ऑफ कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क इसके अंदर इन्होंने प्रोग्राम ऐसे किया हुआ है कि एक कोटेशन मार्क यहां से शुरू हो रहा है और जाते 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 यहां पे खत्म हो रहा है, तो दो कोटेशन मार्क्स के दरमियान में जो चीज होगी इसके अंदर पीछे प्रोग्रामिंग ऐसे हुई है तो उसको एक्सक्लूड करो। जब आप इधर गया, जब आप इस ऑप्शन को, फॉर इंस्टेंस मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने इसकी कोटेशन एक्सक्लूड की हुई है। ओह गॉड, आई हैव माय सेशन इज एक्सपायर्ड, आई एम गोइंग बैक अगेन, जस्ट 1 second. Oh God. Okay, let's go back to something. Let me quickly take you to a report and show you how this quotation mark stuff goes on. फॉर इंस्टेंस ये चीज है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसकी कोटेशंस ऑलरेडी एक्सक्लूड की हुई हैं, मैं इसको इंक्लूड करके दिखाता हूँ। मैंने इंक्लूड किया तो क्या होता है, ये देखिए 51%, ये 39 से 51 पे जंप कर गया बिकॉज इसमें बाकी की कोटेशंस थी। आप कोटेशन को यहाँ गौर से देखिए कैसे नजर आ रही हैं। Somebody please have your mic switched off. We can listen to Okay. Do you see this? Thank you. Do you see this? This is the quotation, starting with the quotation mark, finishing with the quotation mark. ठीक है। अब जब मैं exclude quote करूंगा तो this should be gone. Where is that text? Lord, just 1 minute. Let me have something that I can show you. Look at the name of the novel, A Walk to Remember. When you exclude quoted, let's see what happens. इसने उसको फिर हाईलाइट किया क्योंकि ये इसी तरह Sorry. What should I do other than being sorry? Thanks to a very important thing going on here. You know, choosing a director of a campus is a huge thing. So, anyways, are you with me now, all of you? Okay, we are just about to finish because it's getting disrupted so often. So, what I was talking to you about was about referencing, and I was telling you that the very reason why we don't ask students to give us footnotes or endnotes is because footnote और endnote एक flow of text में बतौर text के treat होता है। Stylistics और जो styles of written text है, they are not going to be understood by the machine. Don't expect it to be. So you should understand that whatever student gives to you, please go ahead, ask now because we're about to finish. जी
listening to it. Just a minute. Okay. Oh. Okay. All right. ठीक है. नहीं, I'm coming to. May I go, sir? May I go, sir? Sure. May I go, sir? If you like to. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Kashif from Faisalabad, you have a question. Please go ahead. यस सर. सर मेरा सवाल ये था कि आपने बताया OCR जो रीडिंग करता है इमेज OCR इमेजेस की रीडिंग करता है. अगर एक कोई स्टूडेंट थीसिस में डाल देता है इमेज तो टर्निटिन उसको ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा या हमें पहले कन्वर्ट करके उसमें फीड करना चाहिए? Okay, दो क्वेश्चन हो गए. Anyone else has a question? I am getting questions and I will repeat the question and answer them. Yes, please. जी सर. Sir, can I have a question? Sir, my second question is. Wait. Yes. Sir, second question is about spacing in the text. कुछ स्टूडेंट जो है स्पेसिंग यूज कर लेते हैं टेक्स्ट में और वो शायद टर्निटिन में नहीं आता. सर तीसरा ये है सर कि जो कोटेशन हम इन्वर्टेड कॉमर्स में देते हैं टर्निटिन उसको रीड नहीं करता. लेट्स से एक स्टूडेंट जो लिटरेचर रिव्यू स्टार्ट से लेके एंड तक इन्वर्टेड कॉमा में दे देता है और इन्वर्टेड कॉमर्स को वाइड कर देता है. ठीक है. उस सिचुएशन में क्या हमारे पास सोल्यूशन है? बिल्कुल सही. ठीक है. सर वन मोर क्वेश्चन. हाँ जी सर. सर एक स्टूडेंट ने थीसिस रन करवा लिया हमसे, डिफेंस हो गया. नाउ ही वांट टू गेट पब्लिश इन समवन जर्नल. तो वो उसी टेक्स्ट को चलाएगा या दोबारा से इसको राइट करना पड़ेगा? Just a minute. ठीक है. Done. Noted. Are you finished? Yes sir. Thank you. Happy? Okay. Dear Fransa, go ahead. I am listening to you. Carry on. Sir, question very is related thesis of MS, Management Sciences, sir. Okay. इसमें सर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट रिसर्च रिपोर्ट, जिसमें हमें 5 ईयर का या 10 ईयर का पिछला डेटा चाहिए, तो हम जो है उसी के बेस पे थीसिस होता है सारा का सारा ऑलमोस्ट. तो सर अगर वो प्लेजरिज्म में चला है तो सर उसकी परसेंटेज तो बहुत ज़्यादा आएगी. अब इसके साथ क्या करेंगे? अच्छा, ठीक है. और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, that's it. All right. Sadiq sir, anything else you have in mind? Sadiq sir. Sir, it's okay. It's okay. What? Everything is going fine? You're enjoying the show? What has happened to the layout? Where have I lost you guys? Okay. Can you see all of us? I can see you only, sir. You can see only yourself? No, sir, only you. सिर्फ मैं आपको only. And what is this? Anyways, basically, all right. So I've got a bunch of questions with me. All of you are here? Yes, sir, I'm here. All right. Sir, I'm here from Quetta camp. Okay. Yes sir. All right. So let me quickly answer the things I have heard. One, Madam Rabia Amir has asked. Just 1 second. You have asked about. God, I forgot. Yes, yeah. ठीक. MLA documentation and about the quotation styles. ठीक है. And italicize also. लेकिन बात ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट MLA के अंदर स्पेसिफाई है कि अगर आपने इतनी लाइन से ज्यादा हो तो आपने इस तरह की ब्लॉक कोटेशन देनी है. ठीक है. और सिमिलरली राइटर का नाम अगर आप मेंशन करते हैं अपने काम के साथ तो आपने जो मतलब जो फॉर्मेट्स के अंदर चीजें स्पेसिफाइड हैं कि राइटर का नाम आपने देना है तो उसको कैसे देना है, इटैलिसाइज करना है, बोल्ड करना है. ठीक है. पहले आपके सवाल का जवाब मैडम ये है कि जब आप कहते हैं कि एक बंदे का नाम है जो इटैलिसाइज करना है तो क्या वो उसको भी इन्वर्टेड कॉमर्स में? नो. पहले एक बात याद रखिए कि जितनी भी चीजें सिमिलैरिटी HEC की दी हुई 19% की लिमिट कवर करती है उसका एक बहुत बड़ा चंक नाम है, सिर्फ नाम. तो वो इटैलिसाइज हो गैर इटैलिसाइज हो, चले फॉर्मेट इटैलिसाइज ही रहने दें, उसकी हाईलाइट से घबराने की जरूरत नहीं है. वो पूरे थीसिस में 100 दफा हाईलाइट होगा, नो बिग डील. वो तो 0.0001% आएगा और वो that does not amount or
that is not tantamount to a huge rise in the similarity. So you don't have to worry about the highlights of the names of any sort. फॉर्मेट आप जो मर्जी रखें लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा. एक बात तो आपकी ये हो गई. दूसरी बात ये कि अब ये थोड़ा सा ट्रिकी इसका आंसर दूसरी बात का कि देखिए एमएलए आपसे कहता है कि कितनी लाइंस के बाद एक ब्लॉक कोटेशन कर दें. फॉर्मेट भी आपको बता देता है कि यहाँ से इतना अंदर हो जाए यूं करके चल पड़े. दैट इज ओके, दिस ऑल मेक सेंस. अब यहाँ डुअल डिफिकल्टी ये है, शेयरिंग विद यू ऑनेस्टली, मैं खुद इस चीज को इससे आगाह हूँ. फॉर्मेट्स आपको बताते हैं कि कोटेशन कैसे देनी है, बट द प्रॉब्लम इज दैट फॉर सम रीजंस, बिकॉज हम ये नहीं कह सकते कि टर्निटिन इज अ परफेक्ट मैकेनिज्म. दिस इज नॉट. Even its developers say that very openly. They say we are trying to improve with the suggestion and carry on and on and on and on. They are trying to build in features. बहुत इस पे तेजी से काम हो रहा है. पिछले 1-2 साल पहले इन्होंने इसमें स्पेलिंग्स रिकग्निशन भी डाल दी. अब ये सर्च पे काम कर रहे हैं. मतलब if you ask me the development side they are working like anything. But बहुत सी वीकनेसेस अभी मौजूद हैं. उसमें से एक वीकनेस ये है कि it should decipher the specificity of citation formats. जिसमें आपने एमएलए का जिक्र किया, तो अगर कोई चीज इटैलिसाइज्ड है, बोल्ड है, तो वो उसको रिकग्नाइज करे कि ये कोटेशन है, इसको जाने दो. ठीक है. लेकिन मैं बात कर रहा हूं वो चीज जो अभी तक मौजूद है, व्हाट इज एग्जिस्टिंग राइट नाउ. अभी इसके अंदर कोटेशन मार्क्स वाली एक्सक्लूजन ही है सिर्फ. समझ आ गई. सो वी आर अ लिटिल, तो उनको बताएं जी फॉर देयर सेफ्टी प्लीज. डन. अच्छा, ये सवाल आपका क्लियर हो गया कि ये बात होगी. अब मैं इससे रिलेटेड एक बात जो मुझसे काशिफ साहब ने फैसलाबाद से पूछी है कि इन्वर्टेड कॉमर्स वाली साइंस की अगर एक स्टूडेंट इतना साइंटिस्ट होता है कि वो जो उसके जितने उसने उठाया हुआ काम है उसको उठा के इन्वर्टेड कॉमर्स में डालता है और एंड पे उसको एक्सक्लूड करता है. मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि एक्सक्लूड कौन करेगा. यकीनन हम जो मैकेनिज्म डिवाइस कर रहे हैं उसमें हम आपसे कहेंगे जी आप उसको प्रोसेस कर रहे हैं. और अगर आप कोटेशन मार्क्स को एक्सक्लूड करते भी हैं तो अब डियर बात यह है कि पहले हाथ कोशिश करें कि आप डॉक्यूमेंट को, अभी मैं आपको ये स्टेज आएगी जब मैं आपसे डॉक्यूमेंट्स की असल रिपोर्ट्स आपसे रिव्यू करवाऊंगा. जब आप उसको देखेंगे, आपकी बर्ड आई व्यू उसका लेंगे, तो आपको पता चलेगा. क्योंकि मेरे पास ऐसे 2-3 केसेस आ चुके हैं. एक का हमने पूरा केस बना के भेजा जिसमें बिल्कुल आपकी सोच दुरुस्त है. लोग ऐसे सोचते हैं जिस तरह लोग ओसीआर से वाकिफ नहीं है, उसी तरह अक्सर लोग कोटेशन मार्क्स की साइंस को एक्सप्लॉइट करने का पूरा प्लान रखते हैं जी कि सब कुछ कोटेशन मार्क्स में डालो और वहां से एक्सक्लूड कोर्स करो, रिपोर्ट ओके है. मेरे पास हार्ड कॉपी पड़ी हुई थी. कैन यू बिलीव, अब आपको मैं साथ में जस्टिफाई भी कर रहा हूँ कि मेरे पास हार्ड कॉपी क्यों आती है. मैंने उस बंदे को हार्ड कॉपी से पकड़ा. मैं उसकी हार्ड कॉपी मैच कर रहा था. मुझे एकदम मेरे कान खड़े रहकर देखा कि यार इसमें हाई कोटेशन मार्क्स बड़े नजर आ रहे हैं. मैंने उसकी रिपोर्ट जब निकाली हुई थी तो रिपोर्ट में मैंने इत्तेफाक की बात की, मैं चूंकि काफी बल्क की डिटेल लुक नहीं ली. जब मैंने उसके कोटेशन मार्क्स को वापस इंक्लूड किया तो उसकी परसेंटेज 40% शूट कर गई ऊपर. अगर फॉर इंस्टेंस 10 थी तो 50 हो गई. उसी वक्त हमने उसके वो सारे पेजेस उसकी हार्ड कॉपी से टेयर अपार्ट किए, साथ लगाए, साथ पूरी कहानी लिखी कि इस बंदे ने ये एक करने की कोशिश की है, इसको जरा ध्यान से डील किया जाए. सो उसका एक खासा इशू बना. सो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इन्वर्टेड कॉमर्स में अगर वैसी ट्राई करता भी है तो आपने एक्सक्लूड कोड को एक कॉशन के साथ यूज करना है. क्योंकि कोटेशन का मैक्सिमम साइज, प्लीज इसको कहीं भी चेक कर लीजिए, जिसको कोटेशन कहा जाता है उसका मैक्सिमम साइज 6, 7, 8 लाइनें कंटिन्यूअस हो सकती हैं. इससे ज्यादा जो है वो कोटेशन की कैटेगरी में नहीं आता. उसको सादा जबान में वो इससे ज्यादा छापे की कैटेगरी में आता है कि ये छापा हुआ है, साथ साथ रखा हुआ है और चल रहा है. ठीक है. सो Madam, let me answer the chain of questions, then I'll come back to you, okay? Because I have a long chain of questions in front of me. Let me try to address them. So, inverted commas की एक बात तो ये हो गई. दूसरी बात आपने मुझे कही कि OCR. Are you with me, काशिफ साहब? काशिफ साहब? Yes, sir. Okay, good. I'm listening. ओके. OCR में आपने कहा कि अगर एक स्टूडेंट इमेज डालता है उसका टेस्ट पढ़ा जाएगा. लेकिन बात यह है कि बट आई वाज माइक प्लीज. Okay. Okay. What I was referring to was the
द टेक्स्ट विच इज कन्वर्टेड एज एन इमेज, और लेकिन वो रहता टेक्स्ट की शक्ल में ही है, लाइनें बनी हुई सब कुछ, लेकिन जब आप एक इमेज ऐसा पेस्ट करते हैं जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है मुख्तलिफ जगहों पे राइट लेफ्ट होके, जिसे कहते हैं ना, जिस तरह गूगल से लोग अक्सर ग्राफिक्स उठाते हैं, इन्फोग्राफिक्स उठाते हैं, चीजें उठाते हैं पेस्ट करने के लिए, प्रेजेंटेशन में डालने के लिए, उसमें टेक्स्ट साथ लिखा होता है, वो पूरा का पूरा एक इमेज बना होता है, वो फोटोशॉप में या कोरल में बना हुआ होता है, उसका कोई इशू नहीं है। मैं बात कर रहा हूं वो टेक्स्ट जो कि प्रॉपर इमेज की शक्ल में बनाया जाता है, लेकिन वो रहता ऐसे ही है कि अगर आप उसको वर्ड की डॉक्यूमेंट में डालें, उसका प्रिंट लें, तो वो प्रिंट ऐसा है कि जैसे ये पूरा टेक्स्ट चल रहा है। मैं उसका जिक्र कर रहा हूं सिर्फ, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। उन केसेस में वो उसको पढ़ लेगा आराम से, क्योंकि जब अगर वो उसमें कोई और काम करता है तो वो फिर आप हार्ड कॉपी खुद देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है ये अगले टेक्स्ट से मैच नहीं कर रहा, मतलब है कि इसमें यहाँ कोई गड़बड़ है। हार्ड कॉपी वर्जन इसीलिए ली जाती है बिकॉज यू हैव टू गिव इट अ गुड लुक। This is why we do the trouble of sending people the hard copies too. ठीक है? अच्छा जी। सर इट मीन्स हमने उसको चेक करना है कि उसने कोई इमेज तो नहीं लगाया। सॉफ्ट कॉपी में भी चेक कर सकते हैं। यही तो जॉब है माय डियर, दिस इज द जॉब। अभी ये आप लोगों को इसलिए तो इस प्रोसेस में बताया जा रहा है कि आप लोग यू शुड बी गुड एट दिस, ठीक है? अच्छा, OCR हो गया। अच्छा, आपने इन्वर्टेड कॉमर्स में पूछा, वो मैंने बता दिया। स्पेसिंग, हाँ, अब स्टूडेंट स्पेसिंग कर करके पेजेस को बड़ा करते हैं। अब स्पेसिंग, ओ गॉड, इस पे आपको एक अलग सेशन देना पड़ेगा मुझे। स्पेसिंग एक लंबा टॉपिक। एक तो आप यूनिवर्सिटी बताती है ना कि लेफ्ट कितनी स्पेस, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट की स्पेस इतनी, ठीक है। स्टूडेंट गेम्स और भी करते हैं। दे हैव थिंग कॉल्ड स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स, स्पेसिंग बिटवीन लाइन्स, एंड फॉर योर शॉक स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर्स टू। जी सर, यही मैं पूछ रहा था। मैं आपको यही बता रहा हूँ। देखें, इसमें इसका हल ये होता है, आमतौर पर भी हम यहाँ एमफिल PhD में गालिबन जल्दी अनाउंस हो जाएगा। अब हो ये रहा है कि पेजेस बनाना तो कोई कमाल नहीं रह गया। अब तो एक इट्स रियली जस्ट लाइक अ क्राइम सीन काइंड ऑफ थिंग। अब होता ये है कि अगर आपको इस तरह के केसेस को देखना है, उसका बेस्ट इलाज होता है वर्ड की डॉक्यूमेंट खोली, नीचे लेफ्ट साइड पे देख लिया वर्ड्स कितने, और वर्ड लिमिट वाली बात पे अब बात तेजी से जा रही है। हो सकता है कि जल्द ही मास्टर्स लेवल पे और मुख्तलिफ लेवल्स पे वर्ड लिमिट स्पेसिफाई कर दी जाए। पेज लिमिट से बात आगे जा रही है, क्योंकि पेज लिमिट में लोग यही कर रहे हैं जो आप बता रहे हैं। तो हमारे पास रिसेंटली एक PhD का थीसिस आया जिसमें वर्ड लिमिट, माय गॉड, स्पेसिफाइड वर्ड लिमिट से कितना नीचे थी, लेकिन उसके पेजेस पूरे थे। बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज की हुई। आपकी इंसानी आंख धोखा खा जाती है जब आप कैरेक्टर्स के दरमियान की थोड़ी थोड़ी स्पेस को देखते हैं, तो वो लेफ्ट से कहा 1.5 तो 1.75 कर दे, आपको नहीं पता चलेगा कि ये 1.5 है या 1.75 है। कैरेक्टर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, देयर इज अ होल बंच ऑफ साइंस गोइंग ऑन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दैट यू कैन डू विद अ डॉक्यूमेंट, उसका साइज बड़ा करने के लिए। सो आपको देखना यह है कि अभी हम इस पे तेजी से काम कर तो रहे हैं, लेकिन आपको अगर कोई वर्ड लिमिट स्पेसिफाई कर सकते हैं अपने कैंपस में, दिस वुड बी द ओनली सोल्यूशन। वर्ड लिमिट स्पेसिफाई कर दी, स्टूडेंट ने सॉफ्ट कॉपी दी, आपने सबसे पहले उसके वर्ड चेक किए, वर्ड लिमिट का मैं डॉक्यूमेंट वापस भेज दी कि इसके वर्ड लिमिट्स पूरे करके लाओ। उससे फिर वो जो अगर इमेजेस पेस्ट करता है वो भी निकल जाएगा, अगर वो स्पेसेस के साथ मस्ती कर रहा है तो वो भी निकल जाएगा। सो ये एक सोल्यूशन है, लेकिन दिस इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। अदर देन दैट वही बात है कि ह्यूमन आई है, आपने सॉफ्ट कॉपी खोल के देखी, आपको नजर आ जाएगा चीजें खुली खुली लग रही हैं, तो आप उसको चैलेंज कर सकते भाई ये क्या है, देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर, ठीक है? ये हो गई बात। और आखिरी मुझसे पूछी है आपने थीसिस बेस्ड रिसर्च पेपर। ये एक अच्छा सवाल है, मतलब सॉरी सारे अच्छे सवाल है, मतलब ये एक काफी जेन्युइन चीज चल रही है। बहुत से लोग थीसिस लिखते हैं, फिर बाद में उससे रिसर्च पेपर भी निकालते हैं। तो अब बेसिकली हम करते ये हैं यहाँ पे कि चूंकि रिसर्च पेपर थीसिस से निकला होता है, ये वर्ड बोला जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसको थीसिस के पैरेलल रन करेंगे तो सिमिलैरिटी ठीक आएगी, लेकिन अगर आप उसको एज एन इंडिविजुअल रन करेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है? थीसिस नमल में प्रोसेस हुआ, रिसर्च पेपर जाके आपने आजाद कश्मीर जर्नल ऑफ लिंग्विस्टिक्स में जाके पकड़ा दिया, उन्होंने प्रोसेस किया, हमारे साथ सिमिलैरिटी आ गई, ठीक है? वो पूछेंगे स्टूडेंट से कि भाई तुम्हारा पेपर 90% सिमिलर है एक सोर्स के साथ, वही वाली मेरी पूरी बात याद करें, स्टूडेंट पेपर सबमिटेड टू हायर एजुकेशन कमीशन, दैट प्रॉब्लम। सो फिर क्या होगा? वो कहेंगे जी, अब स्टूडेंट कहेगा जी सर ये 90% मेरा थीसिस है। अगला सवाल उससे होगा भी कोई प्रूफ है इस चीज का, तो फिर वो गेम चल पड़ेगी, सेंड व्यू रिक्वेस्ट का जवाब। तो आमतौर पे अगर आपको कोई कहे ना कि प्लेजरिज्म जो
जिसके लिए फिर आपको आपने मेरी वीडियोस देखी, उसमें एक वीडियो में मेंशन है ना कि हाउ टू सबमिट रिवाइज पेपर्स। उस केस में यू आर गोइंग टू रन द रिसर्च पेपर एज अ रिवीजन ऑफ द थीसिस, ठीक है, ताकि जो चीजें थीसिस के साथ मैच करे वो निकल जाए, बाकी की रिपोर्ट आ जाए। That's a lengthy answer to your question, but we can discuss it individually if you like. Last from Irfan Saab from Peshawar, 5-year report, इस तरह की चीजें जो थीसिस में लिखी जाती हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ये काफी डॉजी एरिया है। इसकी वजह ये है कि क्या वो रिपोर्ट आप पूरे थीसिस में पेस्ट करके फिर उस पर डिस्कशन शुरू करते हैं, या रिपोर्ट को बतौर अपेंडिक्स अपने काम के एंड पे शुरू डालते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि पैडिंग एक बहुत पेट प्रैक्टिस चल रही है एकेडमिक्स में। लोग ऐसी चीजें डाल के ये ग्राउंड बनाते हैं जी कि हमने पूरी रिपोर्ट पे पूरा थीसिस लिखना है। लिखो भाई, नोबडी स्टॉप्स यू, लेकिन रिपोर्ट पब्लिश डॉक्यूमेंट होती है। पब्लिश डॉक्यूमेंट को प्रॉपर रेफरेंस किया जाता है और रिपोर्ट को उठा के कॉपी पेस्ट नहीं किया जाता। उसके चंक्स डिस्कस हो रहे हैं। जिस तरह मैं आपको मिसाल देता हूं, जैसे लिटरेचर है, फॉर एग्जाम्पल आप लिटरेचर, एक किसी बंदे ने पूरे शेक्सपियर ने पूरा प्ले लिखा है, मैं उसके प्ले पे थीसिस कर रहा हूँ, तो इसको गौर से सुनिएगा, ये आप में से अक्सर लोगों को शायद ये बात आप कम अक्रॉस। मैं उसके प्ले पे थीसिस लिख रहा हूँ, प्ले पब्लिश डॉक्यूमेंट है, पब्लिश डॉक्यूमेंट को रेफरेंस करना चाहिए। आप मुझे बताएंगे क्या मैं अपना थीसिस लिखते हुए उसका प्ले पूरे का पूरा छाप दूं और साथ में ये कह दूं चूंकि ये मैं इस पे थीसिस कर रहा हूं तो ये इसको हक है कि ये इसके अंदर हो? एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप 5 साल का कोई पाकिस्तान की 5 साल की रिपोर्ट है, अपने थीसिस में इस्तेमाल करनी है, करें, शौक से करें, उसका तरीका है करने का, उसको कोट करें बकायदा, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, आगे इन्वर्टेड कॉमास डालें, वो चीज पेस्ट करें, फिर उसको डिस्कस करें, फिर अभी पूरे थीसिस को कोटेशन से भर दें। मैं वो बात नहीं कर रहा कोटेशन मार्क्स देके जाने दो, वो वाली बात नहीं कर रहा। आई एम सेइंग कि आप जिस तरह लिटरेचर का थीसिस लिखते हैं, जिसके अंदर एक नॉवल पे लोग थीसिस लिख रहे हैं, तो वो नॉवल का इंच उठा के थीसिस में डाल देते हैं, लेकिन कैसे? कॉपी पेस्ट करके नहीं। और फिर जिस जगह भी उस पोर्शन को डालेंगे उसके साथ रेफरेंस देंगे, बताने के लिए कि ये शेक्सपियर ने लिखा, लेकिन शेक्सपियर ने खुद नहीं पब्लिश किया। शेक्सपियर की किताब छपी, पेंगुइन वालों ने छापी, ये ईयर था, उसका राइटर ये था। राइटर अगर नहीं भी है तो पब्लिकेशन तो आती है। हम कहें जी शेक्सपियर की किताब किसने लिखी होगी? जिस तरह आप कहते हैं 5 साल की रिपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से निकाली है, तो बाबा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कोई राइटर तो नहीं है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट तो पब्लिश है कि छपी तो है ना। ये थोड़ी है कि वो डॉक्यूमेंट हवा में पड़ी और आपने इसको उठा के अपने काम में डाल दिया। इस आर्गुमेंट के साथ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। लोग ये बात बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं। मैंने आपको उसका पूरा बैकग्राउंड, अपने एक्सपीरियंस पूरे शेयर कर लिए। उसका बैकग्राउंड एक ही है कि आपने थीसिस को तगड़ा करना है, यू हैव टू मेक इट हैवी। ये दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ डूइंग दिस, ठीक है। Hello. Irfan sir, are you listening to me? Hello. Hello. अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ साहब सिद्दीक बोल रहा हूँ क्वेटा कैंपस से। सर कैसे हैं आप? ये सही ठीक ठाक। मुझे लगता है सेशन ओवर हो गया। ये ऐसे ही है कुछ। और सर क्वेटा का वेदर?
क्वेटा तो माइनस में चला गया है आज अच्छा, जी, -5 आज बताया गया है, काफ़ी ठंडा है। ठीक ठीक। और आपके यहाँ कैसे चल रहा है फैसलाबाद में? इसके बाद आज ज़्यादा ठंड है पहले से, 2 दिन तो फॉग ज़्यादा थी, अब आज ज़रा सर्दी का जो है वो ज़्यादा है। अच्छा, और सुनाए, आपके कैंपस में कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं? हमारे कैंपस में भी बस छोटा सा कैंपस है और इंग्लिश है, ये है। ठीक ठीक। आई थिंक सो सर, सेशन की रिकॉर्डिंग चल रही है तो वो हैव टू क्लोज, अगर अदनान साहब नहीं आते। पूछते हैं अदनान साहब से। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़।